नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे बर्निंग इशू के बारे में बात कर रहे हैं जो लगभग हर टैक्स प्रोफेशनल को इंपैक्ट कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 122 ऑफ द जीएसटी एक्ट के अंदर कुछ लोगों के ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट ने सिर्फ पेनल्टी इंपोज करी है फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अगर उन्होंने कोई वायलेशन किया है या फिर गुड्स लेस उन्होंने इनवॉइसेस इशू किए हैं। सेक्शन 122(1) के डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस के अंदर पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। 122(1)(a) में मास्टरमाइंड के लिए जीएसटी के प्रोविजंस है। जो जीएसटी में मास्टरमाइंड होता है, जो फेक इनवॉइसेस की एंटिटीज क्रिएट करके लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से पास ऑन करता है। आज ट्रेड के अंदर लगभग बहुत सारे ऐसे शोकॉज नोटिस हैं जिनमें डिपार्टमेंट ने 122(1) के डिफरेंट क्लॉजेस में या फिर 122(1)(a) या 122(2) में पेनल्टी इंपोज करी है, ओनली पेनल्टी विदाउट इन्वॉल्विंग एनी डिमांड ऑफ टैक्स। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या बर्निंग है, क्या बर्निंग इशू है। बर्निंग इशू ये है फ्रेंड्स कि अभी तक सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 जो प्री डिपॉजिट की बात करता है वो टैक्स की करता है। अगर आपके डिमांड ऑर्डर में टैक्स है तो उसका 10% प्री डिपॉजिट करके आपकी डिमांड स्टे हो जाएगी, आपकी अपील एडजुडिकेट हो सकती है। लेकिन 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद जीएसटी काउंसिल्स ने कुछ चेंजेस रेकमेंड करे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था अमेंडमेंट टू सेक्शन 107 सबसेक्शन 6। और वो अमेंडमेंट क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो अमेंडमेंट है कि 107 सबसेक्शन 6 के अंदर अगर कोई आपको पेनल्टी का भी नोटिस मिला है, पेनल्टी का भी कोई डिमांड ऑर्डर है, तो उस पे भी आपको 10% प्री डिपॉजिट करके अपील फाइल करनी है। आपकी पेनल्टी स्टे नहीं होगी। अगर आपकी 3 करोड़ की पेनल्टी लगी है तो 30 लाख रुपए आपको जमा करके अपील फाइल करनी है। लेकिन ये कब से बदलाव इफेक्टिव होंगे, वो सबसे बर्निंग क्वेश्चन है। मैं आपके लिए क्लोज नंबर 124 जो है फाइनेंस बिल का, जो अभी एक्ट बन गया है, उसकी कॉपी अभी हम तक पहुंचेगी, उसको आपको पढ़ के बताता हूं कि क्या एग्जैक्ट चेंज है। इन सेक्शन 107 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन सबसेक्शन 6 फॉर द प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अभी तक 129 में जो गाड़ियां हमारी पकड़ के जो पेनल्टी लगाते थे उसका प्री डिपॉजिट मैंडेटरी था 25%। नाउ व्हाट इट सेज, द अमेंडेड प्रोविजन सेज provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, अगर कोई ऑर्डर है जिसमें पेनल्टी है लेकिन टैक्स नहीं है, अगर टैक्स है, 1 रुपए भी टैक्स है और 3 करोड़ की पेनल्टी है, इन माय ओपिनियन पेनल्टी के ऊपर प्री डिपॉजिट नहीं करना है। इट सेज विदाउट इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ एनी टैक्स। एनी टैक्स मीन्स अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है जिसमें टैक्स और पेनल्टी है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है तो टैक्स का 10% होगा, टैक्स और पेनल्टी है तो टैक्स का 10% होगा, पेनल्टी और इंटरेस्ट है बट नो टैक्स, इन माय हम्बल ओपिनियन यू हैव टू पे द प्री डिपॉजिट ऑफ 10%। No appeal shall be filed against such order unless a sum equal to 10% of the said penalty has been paid by the appellant. Very critical, very important change. And now the finance bill says that these provisions are going to take effect from 1st April 2025. This is very dangerous. Now we are in the April 2025. Today is 8th of April. And I'm getting so many orders wherein I have to file the appeal. Now the burning question, the moot question that comes to our mind is whether today I'm filing the appeal, whether the pre-deposit has to take place or I have to file the appeal without pre-deposit. Now friends, I will take you to the process of amendments which takes place in GST, how the amendment takes place. The first point is, the first step is the council has to recommend the amendment in act. Now, the council has recommended in 55th meeting
Now the central body, which is the parliament, has passed the finance bill. The clause 124 has been passed and it has received the assent of the Honorable President of India. Now parallelly, to amend the 1076 of the state GST acts like Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, etc., these amendments has to be passed from the respective assemblies also. In my humble opinion, so far they are not moved or they are not passed by the respective assemblies, all 29 assemblies of the states and UTs having the legislature. The moment the act is passed by the parliament as well as all the state assemblies, then effectively it gets notified or it becomes applicable. Now, in my humble opinion, they had the intention to amend these provisions from 1st of April 2025. Now, the important questions will be, what will happen to those appeals which we are going to file from 1st April 2025 onwards? Since today the provisions are not effective, but tomorrow they will notify the amendment and they may notify the amendment from 1st of April 2025, that is retrospective amendment, or you can say retroactive application of the section 107 subsection 6. So friends, these are the important questions. In my humble opinion, as on date, you should file the appeal immediately without pre-deposit, and tomorrow if there is something happens, we have very solid grounds to contest that these kind of provisions cannot be made applicable retrospectively. These has to be prospective amendments. Like they will be applicable on those OIOs which are issued from the date when the notification has been issued, not to those OIOs which are already issued, wherein we have already filed the appeal also. So friends, this was my humble opinion in case of a very critical, you can say the draconian provisions which will impact the huge litigants who are getting the orders under section 122, one different clauses, 122 1A, 122 2, etc. So thank you very much for watching this video. Have a nice day.